whatever we are learning, make sure to practice. Otherwise, all this learning is waste. So, why we are creating service connection? Because Azure DevOps is a separate application, Azure Portal is a separate application. So you can use Azure DevOps to manage your project, keep your code, do CI/CD pipelines, and deploy somewhere else. You can also deploy on AWS cloud, but use Azure DevOps. You can deploy it on a virtual machine, on Linux server, on Red Hat, anywhere you can deploy. Or you can also deploy on Azure Cloud Service. So for that, you need to create something called a service connection. For here also you will create service connection depending upon which is the target system where Azure DevOps will deploy. That is what we were doing. So here, when you go to service connection, here you have to come to the bottom completely, then project settings. In the project settings, you have to find service connection. Then click on create service connection. Now service connection can be of different types depending upon what is the target service you are using. If you would have used Docker Kubernetes, something else we would put Docker registry to access there can be many service connection you can create. Like I want to, from Azure DevOps, I want to push my Docker image to Docker registry. So I have to create a service connection like this with using Docker registry. If I am pushing my artifact to somewhere else, let's say which is here, you see npm repository, Jenkins also I can connect from here, but I can also deploy to Kubernetes cluster from here. For now, we will take Azure Resource Manager. And then it will look for which subscription it should connect to. See, it automatically found out the subscription for me. And it is asking me to log in. Let me log in here with my account. See, it now fetched my subscription automatically. Now I have to give the service connection name. This name is very important. And what is this name? This name is related to our code. In our code pipeline, we gave a name here, service connection. Yeah, this is the service connection name we have to give. Copy this, which is Azure subscription. Here also it is written Azure service connection name for auth. Go there, paste it here. And other things can be optional, it's fine. And I'm saying with this, using this service connection, allow me to run all pipelines. So it will be shared. And here, there are different options that you can use for deploying the application. So for now, we have created the service connection. Now let's go back. I will go to pipelines, run pipelines. Here is our pipeline which ran and failed. I will click this pipeline, run again. We'll take the dev branch and run it. Let's see what happens. So there's our build stage and it is deploy to dev.
Those were the two stages we had, right? Build stage, see, and then deploy to dev भी कहीं लिखा होगा, ये रहा. So पहले build stage पार होगा. Build stage में भी अलग अलग steps थे. So if I click on any of this, see, task Maven version is deprecated, use a separate one, it is saying. So we can find it. If I click here, क्या कर रहा है ये? Java install कर रहा है. First step. It did in the job, the first task we gave. Then Maven clean करो, clean package it is doing. Then it will copy the jar to staging. So it is building that. It has uploaded. So it is saying one artifact produced. क्या है ये artifact? We'll go and check. कहाँ पे? See, microservice में folder में published artifacts. It was put it here. Drop. What? The jar file. कहाँ से मिला? We told. हमने बोला था सब करने को इसको. अपने मन से उसने कुछ नहीं किया. Installed. It installed the Java. Then copied the jar from the after the build from target to staging, and then it published to drop folder. And we are seeing it is available here. After that, deploy stage will automatically kick in and read from here and try to deploy. चलो देखते हैं deploy stage क्या हो रहा है. Let's go to the pipeline again. So this is our pipeline which is still running. See, second stage has not yet run. It is waiting. It is waiting what? Why? Permission is needed for approval. So if I click here, it is asking the pipeline needs your permission to access a resource before this can run to continue to deploy to dev. I will say view. I will say, see, environment development बनाया था याद है? That environment is linked. So I will say permit. Allow it to go and deploy to app service. But now app service तो है ही नहीं. App service है नहीं तो fail होगा. Fail होगा नहीं कि पास हो जाएगा. So artifact download कर लिया वो drop से. But Azure Web App, this stage it will fail. Deploy to app service बोला. But you click here. क्या बोला है? Resource in Azure App Service does not exist. Resource should exist before deployment. करेक्ट है ना? तो चलो बना लेते हैं रिसोर्स. गो टू portal.azure.com. यहाँ तक समझ में आ गया? एवरीथिंग क्लियर? हेलो. यस सर, यहाँ तक समझ में आया. So let me create, because we are deploying to dev environment, let me create a dev for so the resource group. उसमें बनाएंगे हम. उसमें उसका डेटाबेस बनाएंगे. उसमें वो जो जितना चीज हम पढ़ चुके हैं उसमें डेटाबेस बनाएंगे. उसका उसका ऐप सर्विस बनाएंगे. एंड देन वी विल डिप्लॉय थिंग्स देयर. रिसोर्स ग्रुप्स में जाएंगे. रिसोर्स मैनेजर आएंगे. रिसोर्स ग्रुप्स. डेव एग्जिस्ट करता है, नॉट देयर. बना लेते हैं. INV RG. नेमिंग कन्वेंशन ऑलवेज फॉलो. नेवर कॉम्प्रोमाइज इन नेमिंग कन्वेंशन. अदरवाइज जितना पढ़ लो इंटरव्यूअर को लगेगा ये कुछ जानते ही नहीं है. बिकॉज नेम ही तरीका है ना जानने का वेदर यू आर रियली सीनियर और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री और नॉट. स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्रोसेस, परफेक्शन कितना है. किस कोई काम अगर कर रहे हो वो सब दिख जाता है. तो अभी ऐप सर्विस विल क्रिएट ऐप सर्विस. ऐप सर्विस को क्रिएट करने के लिए ऐप सर्विस प्लान पहले से क्रिएट कर सकते हैं या साथ में ही कर सकते हैं. लेट्स क्रिएट अगेन ऐप सर्विस. सो आई विल क्रिएट एन ऐप सर्विस वेब ऐप. रिसोर्स ग्रुप.
जैसे ये ऐप सर्विस का नाम दे दिए, कोड है, दिस इज कोड, रन टाइम स्टैक, जावा 21, एम्बेडेड टॉमकैट लिनक्स, रीजन सेंट्रल इंडिया। प्रीमियम V3 नहीं चाहिए, सिंपल ऐप सर्विस में भी हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। डेटाबेस हमें नहीं चाहिए, रिव्यू एंड क्रिएट। तो इट्स ट्राइंग टू वैलिडेट नाउ, प्री एसक्यू क्रिएट करो। मीनवाइल हमारा पाइपलाइन, all the pipeline runs you can see from here, pipelines, यहाँ आ जाओगे, ऑल पाइपलाइन यू कैन चेक। यहाँ एक पाइपलाइन है, मान लो तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट होते, 10 रेपोज होता, 10 माइक्रो सर्विस का 10 पाइपलाइन ऐसे बनाते, 10 का नाम अलग होता। यहाँ पे पाइपलाइन फेल हो गया है, पाइपलाइन को जाके चेक कर सकते हो यहाँ पे क्यों फेल हुआ था, इसके रन अलग अलग रन से हुए थे, तो ये स्टेज फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था वो यहाँ से देख सकते हो और फिर उसको फिक्स करोगे। नाउ what we will do is we will first get that app service running. Requested resource not supported in the region. Okay, free वाला is not in this region available. ठीक है, we can change it. अभी के लिए एक दूसरा टीयर ले लेते हैं, फ्री अलाउ नहीं कर रहा है तो। dev central India, प्रीमियम V3 नीचे, V3 B1 should be fine। थोड़ी देर के लिए दिखाना है, then I will delete it। क्रिएट करते हैं अभी। Trying to deploy now, let's see। ये डिप्लॉय हो जाने के बाद then what we will do is we will run the pipeline again in our Azure DevOps, then it will do build, then deploy, and after that what we will do, we will just go ahead and run the, do some code changes and do commit. It will automatically go and trigger the pipeline, do all those builds and deploy it। Requested resource app service dev 01, ये तो बंद हो गया। लेट्स चेक रिसोर्स ग्रुप में रिसोर्स बनाया या नहीं। दैट इज फाइन, ये नहीं चाहिए हमें। ऐप सर्विस बनाया या नहीं चेक करते हैं। ऐप सर्विस भी नहीं बना, क्या हो गया। रिसोर्स ग्रुप में देखते हैं क्या बन गया है। ऐप सर्विस
दिस इज ऐप सर्विस। व्हाट इज दिस इज एप्लीकेशन इनसाइट्स। ये तो हमें नहीं चाहिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, हमको ऐप सर्विस चाहिए। ये क्यों बोल रहा है, व्हाई इट्स नॉट अलाउइंग टू क्रिएट ऐप सर्विस? लेट्स फर्स्ट क्रिएट एन ऐप सर्विस प्लान, फिर देखते हैं। डेव में लिनक्स। लेट्स टेक दिस वन ओनली फॉर नाउ, प्रीमियम टियर। हमारे रीजन में ये अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, जो वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है उसी को ले लेते हैं। मंथली कॉस्ट इतना आएगा वो बोल रहे हैं। बेसिक्स रिव्यू क्या फेल हुआ? INV ASP Dev 01 is the app service plan. Create. Sometimes कुछ कुछ रीजन में कुछ कुछ सर्विसेज ऑफ कर देते हैं, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन उस रीजन में अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। सो जो एप्लीकेशन चल रहा है दैट इज फाइन, बट जो नया बनेगा उसमें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो हैव टू अर्न मनी ना। दे विल अलाउ एवरीथिंग फॉर चीप, प्रॉब्लम हो जाएगा। देन ऐप सर्विसेज में जाएंगे। हाँ, मुझे ऑप्शन वेब एप्स कर लेते हैं। ऐप सर्विस फॉर वेब एप्स करना है। नाउ इट विल गिव यू ऑप्शन वेब ऐप। नाउ वी कैन से रिसोर्स ग्रुप, वापस से वही डेव वाला, बिकॉज दिस डेव एनवायरनमेंट। Same thing you have to do for test acceptance production, and you can create a pipeline. You can extend this same pipeline. I will tell you how. कोड है रन टाइम स्पार 21, देखे देखते हैं फिर से। कनाडा प्रीमियम टियर तो अवेलेबल होगा हर जगह। ये डेव 0 ऐप सर्विस प्लान ऑलरेडी उसने चूज कर लिया। क्रिएट। क्रिएट। मीनवाइल हम अपना पाइपलाइन उधर से रन कर देते हैं। यहाँ पे वो ऐप सर्विस तो बना रहे हैं। ऐप सर्विस एप्लीकेशन इनसाइट्स बनाया, ऐप सर्विस नहीं बनाया। लेट इट क्रिएट। डिप्लॉयमेंट चल रहा है। मीनवाइल एक चीज समझ लेते हैं कैसे काम करता है।
दिस इज योर वन एप्लीकेशन इन्वेंट्री एप्लीकेशन एक है जिसको रिपोजिटरी में रखा। ऑर्डर एप्लीकेशन दूसरा है। ये मैं बस बैकएंड बोल रहा हूँ, जैसे ही फ्रंट एंड होगा सबका। पेमेंट होगा, शिपिंग होगा, सब अलग अलग एप्लीकेशन है। तो एज्योर बोर्ड में, एज्योर रेपोस में ये इसका रेपोजिटरी रहेगा, तो इसका मास्टर ब्रांच होगा। फिर फीचर ब्रांचेस होंगे या डेव ब्रांच होगा। डेव टेस्ट एक्सेप्टेंस प्रोडक्शन ऐसे। सेम फॉर ऑर्डर का भी मास्टर ब्रांच होगा, फीचर ब्रांचेस होंगे। फिर फीचर ब्रांच को ये मास्टर में मर्ज करोगे पुल रिक्वेस्ट करके। मास्टर फीचर, मास्टर फीचर, ऐसे ही हर एप्लीकेशन के लिए होगा। हर एप्लीकेशन के लिए एज्योर रेपोस में ऐसे बनाएंगे। फिर सभी एप्लीकेशन के लिए पाइपलाइन बनाएंगे। तो इसका क्या होगा, इन्वेंट्री का डेव एनवायरनमेंट होगा, टेस्ट होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रोडक्शन होगा। इन्वेंट्री एप्लीकेशन के लिए ये चार होंगे। ऑर्डर का भी होगा सेम चारों। डी टाइप एनवायरनमेंट इसका भी होगा। सब कोई सब एनवायरनमेंट चलेंगे। ओके, डन। नाउ पाइपलाइन जब बनाएंगे तो इस पाइपलाइन को बोलेंगे कि दिस इज फॉर इन्वेंट्री सर्विस, तो गो एंड कनेक्ट हियर, टेक द कोड, डू वन टाइम CI एंड डू मल्टीपल टाइम CD। वन से वन सेकेंड यहाँ पे CD। तो एक ही बार कोड बिल्ड होगा और मल्टीपल बार डिप्लॉय हो जाएगा। यहाँ भी डिप्लॉय होगा डेव में। सेम I will create another pipeline for this service and only one CI and multiple times CD I will do in different environment deployment। समझ में आया कैसे सेटअप होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? तो तुम मान लो तीन काम मिला है, ऑर्डर और पेमेंट सर्विस पे चेंज करने का। यू विल गो एंड क्रिएट अ फीचर ब्रांच फ्रॉम मास्टर on each, do your code changes, go to the pipeline of order service, and there you choose your branch as dev, or your feature branch you can choose, and click on run. Then it will do the run, and then it will do the deployment on the dev environment for you if you are running the dev branch or feature branch. If you are running the master branch, then it will try to deploy on acceptance of production, but their approval and other things are needed. सेम शिपिंग के लिए भी एक पाइपलाइन होगा। हर एक चीज के लिए एक पाइपलाइन होगा। कोई मैनुअल वर्क नहीं होता है IT इंडस्ट्री में। इतना तक क्लियर है? रिसोर्स भी बन गया। अब रिसोर्स हमने उसी नेम से बनाया, तो विल जस्ट गो एंड आई कैन रन दिस अगेन। आई कैन से रन द फेल्ड जॉब, rerun failed jobs I can say. Then it will try to just run this part again, this part। डिप्लॉय टू डेव खाली फिर से चालू हो गया। बिल्ड तो हो चुका है एक बार, कितना बार बिल्ड होगा? तो डिप्लॉय टू डेव फिर से वो करेगा। तो इस बार वो इट विल ट्राई टू लुक फॉर अ service which I created, the app service, and it will try to deploy it there। See, Azure pipeline, downloading the artifact, Azure web app, and here Azure web app will look for the app service। So deploy to app service, it again it failed। The INV dev resource does not exist। This is कैसे बोल दिया इसने? Let's go to Azure DevOps resource group। Resource group is nothing but a folder. So we are going there to see what are the different resources running in that folder. So in the dev resource group, this is the name of our, there is an application inside है। एप्लीकेशन इनसाइट इस नाम से भी बना दिया है। दो दो एप्लीकेशन इनसाइट बना दिया है। डिलीट करो।
एप्लीकेशन इनसाइड हम लोग बाद में सीखेंगे वो क्या है. No, 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 no. I will delete all this service. Delete. हम्म. अभी ये ऐप सर्विस प्लान, यहाँ डिप्लॉयमेंट 2 times फेल्ड. यहाँ वो डिप्लॉयमेंट ट्राई कर रहा था. अच्छा खैर ये तो रिसोर्स का डिप्लॉयमेंट है. Azure in-depth app service, control F. Got service connection details for Azure App Service Dev 01. Then resource this does not exist. Resource should exist before deployment. Let's see. Let's see. Run pipeline again. Dev branch. Run again. वो जो हम अभी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे नाम क्या दिए हैं देख लेते हैं. सर्विस कनेक्शन तो ठीक है. ऐप नेम क्या दिए हैं? INVAS Dev 01. दिस इज द ऐप सर्विस. सो ऐप सर्विस तो है. नॉट श्योर वो क्यों नहीं बोला पहली बार में. बट अभी देखते हैं. अभी बिल्ड हो गया है. डिप्लॉय करने का कोशिश करेगा अब. अगेन फेल. डिप्लॉय टू ऐप सर्विस फेल. हमारा सर्विस कनेक्शन में कुछ इशू है क्या? सर्विस कनेक्शन को देखते हैं. फेल टू गेट एक्सेस टोकन फ्रॉम दिस. Let me enter the credentials. तो अभी जैसे पाइपलाइन जितनी बार मैं चलाऊंगा इट विल चार्ज मी मनी दैट मच फॉर दैट मच. Very fractional amount of money. But if I don't run any pipeline, if I leave it open and leave the code like that, this DevOps will not be charging me. One second.
एक से ना, लॉगिन करने का इशू आ रहा है। बट यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? नॉट गेटिंग द कोड। टोकन नहीं आ रहा है गिटहब से। बैक करके देखते हैं। Hmm. Now it accepted that. Fail to get access token from Strongbox. Key is invalid. What? Wait. ये हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा रिसोर्स ग्रुप जो है ना, डेव रिसोर्स ग्रुप हम चेंज कर दिए हैं। तो अब पाइपलाइन फिर से कनेक्ट करते हैं, रन करते हैं, इसको देखते हैं। हमने रिसोर्स ग्रुप जो था ना, वो डेव को यूज करना है हमें। सो रीरन फेल्ड जॉब, यस। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं करता है क्या। अब कर देना चाहिए डिप्लॉय उसको, क्योंकि वो दूसरे रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय करने की कोशिश करा तो वहां तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भी कर रहे हैं वो, डाउनलोडिंग डिप्लॉइंग आर्टिफैक्ट। डाउनलोड करके जार को ऐप में, जो वेब ऐप सर्विस है, अब मिल गया उसको। बिकॉज वो हमको वहां पे रिसोर्स ग्रुप देना था सर्विस कनेक्शन में, यहाँ पे ये राइट रिसोर्स ग्रुप देना था। तो अभी वो डिप्लॉय कर रहा है पैकेज। ऐप सर्विस एप्लीकेशन सेटिंग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड पैकेज इज गेटिंग डिप्लॉयड एज अ जिप फाइल। यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। तो अभी जाके हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। एक तो हम अपने कोड में कुछ चेंजेस कर देते हैं, देखने के लिए कि वो नया पाइपलाइन ट्रिगर कर रहा है कि नहीं। डुप्लीकेट टैब, पोस्ट फाइल्स में जाके मैं अभी यहाँ पे कुछ एक चेंज कर देता हूँ। क्योंकि कमिट में हमने बोला था ना डेव में, लेट से कंट्रोलर में मैं जाके हेल्थ कंट्रोलर में अभी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। स्टेटस ये मैं बोलता हूँ, ये चेंज्ड टू डेव, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। जैसे ही कमिट करूंगा, ऑटोमेटिकली एक और पाइपलाइन रन होना शुरू हो जाएगा। एक और पाइपलाइन का इंस्टेंस यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं पाइपलाइंस में जाता हूँ अभी, एक और इंस्टेंस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। देखो,
अभी ये अभी अभी शुरू हुआ, क्योंकि अपडेटेड हेल्थ चेक अभी मैंने कमिट किया। ये दूसरा वाला डिप्लॉय फेस चल रहा है 13 मिनट से गो, और ये वाला मेरा अभी अभी मैंने कमिट किया, तो ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया, बिल्ड स्टेज फिर से शुरू हो गया। बिल्ड कर रहा है अभी वो, और फिर उसके बाद सेम चीज डिप्लॉय करेगा। तब तक यहाँ पे वो